So this question is very easy questions, and this question is very important towards your competitive exams. Okay, the question: a body is moving with uniform velocity of 8 meter per second when the body just crossed the another body. That means the first body crossed the second body. The second one starts and moves with the uniform acceleration. The second body and moving with the constant acceleration of 4 meter per second square, and the time after which the two bodies meet. Now we will find the time. Okay, we have to calculate the time taken after which the two bodies meet. Okay, now time is equal to 2 second, 4 second, 6 second and 8 second. So, and that means the motion of the first body, motion of the first body, okay, and motion of the first body in case of here, the first body move with a constant acceleration, sorry, constant velocity or uniform velocity. That means the first body moves with a uniform velocity. Uniform velocity means what? Constant velocity. Uniform velocity v, and its displacement s1 after time t. After time t is equal to how much? Okay, but we know the formula, simple formula using displacement is equal to velocity into time, that is s1 is equal to velocity into time, using this formula. So but in case of velocity is equal to 8 meter per second, yes or no, that constant velocity is 8 meter per second, so that is s1 is equal to 8 t. Okay, here s1 is equal to 8 t. Next one is the motion of the second body. Okay, the motion of the second body. So motion of the second body, but in second body the initial velocity of the second body is equal to 0. That means the second body starts from rest, means initial velocity is equal to 0 and moves with a uniform acceleration. And its displacement is s2. Okay, the displacement s2 after time t, after time t. So using the second motion, equation of motion, okay, that means the form is s2 is equal to ut plus half a t square. In case of initial velocity is equal to 0 and constant by uniform acceleration is 4 meter per second square, that means s2 is equal to 0 into t plus half into 4 into t square. Now cut it to, so is equal to 2t square. So that is s2 is equal to 2t square. s2 is equal to 2t square. But in case of question is the time after which two bodies meet will be, that means they meet their displacement. Since they meet their displacement are equal, that means s1 is equal to s2. Okay, that means 8t is equal to 2t
t square. So t square is equal to 4. T square is equal to 4. So t square is equal to 8 by 4. Sorry, 8 by 4, not 8 by 4, 8 by 2. Okay. So t square is equal to 8 by 2. So 8t, t square is equal to 80 by 2. T square is equal to 80 by 2. Okay. And t is equal to 4. Now time is equal to 4. Okay. So which one is correct answer? So your correct answer is option B is correct. पिला मैंने देखी पार्छ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे देख क्वेश्चन को पढ़ सब बेले तो ये कौन अच्छे बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड तो गोटे बॉडी कौन अच्छी जो मूव मोशन कर इनिशियल वेलोसिटी केते अच्छी बोले ना 8 मीटर पर सेकेंड देती इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दे देती व्हेन द बॉडी जस्ट क्रॉस द अनदर बॉडी ताने गोटा बॉडी जो आउ गोटा बॉडी को क्रॉस कर सेकेंड बॉडी कौन कर सेकेंड वन स्टार्ट्स से जस्ट स्टार्ट्स हो माने कौन ना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी मस्ट बी 0 एंड मूव्स विथ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तापर सेकेंड बॉडी कौन जो मूव कर इनिशियली कौन जो रेस्ट अच्छा जो मोशन कर एक्सेलरेशन के कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देले तो टाइम आफ्टर व्हिच द टू बॉडी विल मीट तेणु से पचार जो दुईटा बॉडी मिसिबो से टाइम केते हबो ता माने डिस्प्लेसमेंट आम बाहर करवा नहीं दुईटा बॉडी केते डिस्प्लेसमेंट में फाइंड करदे तेणु फास्ट कौन कले ना मोशन ऑफ द फास्ट बॉडी देख मोशन ऑफ द फास्ट बॉडी द फास्ट बॉडी मूव्स विथ द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन अच्छी एंड डिस्प्लेसमेंट S1 आफ्टर टाइम टी तो टी समय पे डिस्प्लेसमेंट आम बाहर करेंगे केते डिस्प्लेसमेंट होची तेणु ये आम डिस्प्लेसमेंट बाहर करदेलु S1 इज इक्वल टू सिंपल इक्वेशन फॉर्मूला कहूँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम ये आम सिंपल इक्वेशन सिंपल फॉर्मूला यूज है ये जो फॉर्मूला यूज है पे देख ये कौन लिखली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम ये सिंपल फॉर्मूला को सॉल्व करवा ठीक अच्छे या आम सिंपल फॉर्मूला यूज कले तो S1 इज इक्वल टू 8t है तापर कौन मोशन ऑफ द सेकेंड बॉडी बाहर करवा सेकेंड बॉडी मोशन किंतु सेकेंड बॉडी हूँ कौन जस्ट मूव कर कौन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अच्छी सेकेंड बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देछि माने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे देछि एंड डिस्प्लेसमेंट बाहर करवा आफ्टर टाइम टी के तार डिस्प्लेसमेंट होची एटा किंतु हम सेकेंड इक्वेशन तो ये जनरल फॉर्मूला पुट कले हेनी ये किंतु हम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फॉर्मूला कौन हो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर यहाँ सेकेंड इक्वेशन ना बोले तो ये इक्वेशन आम ये पुट करवा इनिशियल वेलोसिटी 0 अच्छी एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन अच्छी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये इक्वेशन पुट कले S2 इज इक्वल टू 2t है तापर कौन कौन से मिसिबो दे मीट देयर डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल जो से मिसुचर डिस्प्लेसमेंट कौन हो कांस्टेंट इक्वल हो S1 इज इक्वल S2 दुईटा डिस्प्लेसमेंट सेम हो तेणु यहाँ के आम सल्व कले 80 प्लस 2t स्क्वायर तार टी स्क्वायर इज इक्वल 80 by 2 हो टी इक्वल टू के 4 होगा टी के ना 4 होगा तो मोर आंसर हो 4 हम ठीक अच्छे जदि भिडियो भल लगुच लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब कर जमारू भूल नहीं थैंक यू फॉर योर वाचिंग थैंक यू।